जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, तो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है, यूं देख रहा है तो देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन से मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात। यहाँ तुम्हारा आपोड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई है। कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखा। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो। 12 बज गए, तुम 4 बजे आ जाना। नहीं गुरुजी 1-2 मिनट और लगे। फिर निकाला, सर क्या कर रहा है? दिखता भले घर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते। मेरे का तो रूप, तुम्हारे जीवन में एक ही भगवान है, गुरु ही। मेरे तो हजारों रूप है। तो उसने यूं करके मैं उसे देखता, मैं कहता तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? नहीं गुरुजी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है। मैं कहता तुम कुछ बात करें? हाँ गुरुजी एक सेकंड। तो मैंने कहा तुम अभी पागलखाने से छूट के सादरा से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं तो हापुड़ में रहता हूँ। तो मैं हापुड़ में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, मैं तो आगरा में या सादरा में। तो तुम हापुड़ में कैसे आया? मुझे आप मुझे पागल समझ रहे? मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटल की गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कहने की ऐसी बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसा सुनूंगा? गुरु जी क्या है कि तो आपको क्या बताऊं गुरु जी? कुछ बात कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे? फिर निकल रखने गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तुम कही दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। ये बात है, तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं, आपको कही दे। 15 मिनट तो हो गए, कह दूंगा फिर। आपने कोई प्रेम किया किसी से? मैंने कहा ऐसा शिष्य पहली बार आया पूछने के, सीधा गुरुजी से डायरेक्ट कन्वर्सन पूरा किया है, बहुत किया, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो। मैं जब पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल 2 टूक बता रहा हूँ। बस मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा, तुम क्या पूछना चाहते? नहीं आप 2 टूक शर्माई नहीं, सच्चाई। मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया? तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठिकाना है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, और तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरुजी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी का दिल जान सकता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। तो मैं कहते दर्द बोल पे, दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द है? इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने, मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तुम सारी इतना दर्द भोग रहे होगा, अब मालूम नहीं तेरा दर्द तक मैं पहुंचू नहीं पहुंचू। मगर क्या नहीं, आप ये पहले ये बताए कि मैं अपनी समस्या बताऊं, लेकिन मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं। कि करते होता शिष्य पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या खाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कर क्या रहा है? कि कुछ नहीं, अभी बता दूंगा। निकाल हाथ में रख, ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया जाता है इसके पास। गुरुजी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरुजी, ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें जब फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है? नहीं आप मजाक प्लीज, आप मजाक समझिए, मजाक समझिए जरा। मैंने जिंदगी में गुरुजी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते?
मैंने कहा जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूँ उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और जो पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं, गंगा होता तो नदी का नाम होता। गंगा को गंगा जानते हो? तुम्हें ऐसा कहते हैं, हाँ गंगा द्वार में। कोई यमुना को कहते यमुना जानते, कोई यमुना। पुष्पा तो पुष्प तो है क्या? नहीं, पुष्प नहीं गुरुजी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं। तो मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो मैं कहता, तू मुझे प्यार करता, मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तू रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं तो हापुड़ में आया नहीं, यही तो गड़बड़ है गुरुजी। आप आता, मैं दिखा था आपको गुरुजी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वहीं खड़े रहे। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरुजी, मैं आपको बताता। मैं तो हिल करके चेहरे यहाँ तक आ गया गुरुजी। अब तो क्या है गुरुजी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था। वो कभी बोली नहीं, जिंदगी में आज तक बोली नहीं गुरुजी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरुजी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरुजी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, ऐसा कुछ आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म पढ़ी है। ये फोटो आप देख लीजिए, ये मुझे फोटो दिखाई, दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। मैंने कहा भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत हुई नहीं, गड़बड़ हुई बातचीत, सबसे बात करती, मुझसे बात नहीं रहती, मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हाँ भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। मैंने जिंदगी से आधा घंटा तो हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये साला दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता। ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं हो तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ कुछ लुढ़क के नीचे बेहोश रहा, कुर्सी लुढ़क की अलग नाटक है। अब देखे तो मुंह से झाग आवे, पागल मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली, पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। तुमने कौन सी पुष्पा है? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा, इसकी जेब में फोटो है, इसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था, इतना सा बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। मैं कहा 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे दरकता रहेगा, कोई जरूर नहीं साहब, इसी से पेश में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उसको जूता सूंघाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्य को बुलाया। मैंने कहा भाई ये अब शिष्य को कैसे बताऊं मैं क्या? बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया कि गुरुजी आप 12 बजे मत मिला करिए। मेरे को नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे, 12 बजे जो आते हैं कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहले वो देखा नहीं, 12 बजे दिमाग खराब होता है, घर में देखा नहीं, तो इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाकर होश आती उसमें, चल मैं क्या चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरुजी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए ही पैदा हुआ। ये वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है उदाहरण दिया, ये संबंध होते हैं। और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवानगी, अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित है। जब वो प्राणों में स्थापित है तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित है। मैं अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बाप उसके पास करोड़ रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा। तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्योपनिषद या गुरुपनिषद या दूसरे दुर्गा सप्तशती या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए,
तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चैतन्यता, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हारा अपने आप समाहित हो जाएंगे। फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो महाराज अपने का है, ये रास्ता भी। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया है। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं, केवल एक चिंतन है, वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवम समर्पयेत्, ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन, दौलत, ऐश, भोग, आराध, वो सब कुछ तुम्हारा है। त्वदीयम वस्तु को आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवम समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे ग्रस्त की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही, वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है, ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है। इसके आगे की स्टेज साधक की स्टेज, चौथी स्टेज जिज्ञासु, उसके बाद चैतन्यता, फिर शिष्य, फिर साधक, फिर साधना में अपने आप में पूर्णता, फिर उसके सामने लक्ष्मी अपने आप नृत्य करने लग जाती है। फिर उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु स्थापित है, गुरु की चैतन्यता स्थापित है, गुरु का मंत्र स्थापित है, गुरु अपने आप में पूर्ण ताकत के साथ स्थापित है। जब गुरु के सामने ये सब अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां और ये 10 महाविद्याएं नृत्य करती है, तुम्हारे सामने नृत्य करेंगी, कहां जाएंगी वो? फिर तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि शत्रु को तकलीफ दे सके, फिर काली अपने आप उसका संहार करेगी, फिर लक्ष्मी अपने आप तुम्हें संपन्न बनाएगी। फिर तुम्हें कोई उस देवियों को हाथ जोड़ने की, घी की आरती लक्ष्मी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें पांव फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक, या तुम पत्तों को पानी मिलाओ या तुम जड़ को पानी पिला दो। जब जड़ को पानी पिला दोगे तो अपने आप पूरे पेड़, डालियां सब हरे हो जाएंगे अपने आप। जो तो सेवे मूल को फूले फले अगाए, मूल को सींचने की क्रिया जरूरत है। मूल वह है जिसको शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है, गुरुदेवो महेश्वर। मगर क्योंकि तुम्हारी स्थिति अगर जिज्ञासु की है तो कहोगे कि ये गुरु एक सफेद कपड़े पहने हुआ गुरु कैसे बन सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके सामने लक्ष्मी कैसे नृत्य कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कर सकूंगा नहीं कर, ये तुम्हारी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। इसका मतलब तुम अभी शिष्य बनने की क्रिया भी नहीं आई। जब तुम अपने आप में जुड़ जाओगे तब उसके गुण अवगुण तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे। जब लैला मजनू अपने आप में, वो लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिगनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका, मजनू हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी है जो मेरे राज दरबार की, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्हें एक को देखा, देखने के बाद इसमें लैला तो कोई है नहीं, लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूं? फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ और सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी, उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करो तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त करोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे, तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी। कितनी साधना करोगे, कहां तक साधना करोगे? समय तुम्हारे पास बहुत कम है, ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, और ऐसा तुम में हो। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। The deepest love is between two lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the two has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried and impatient. It was about 7 to 8 years back
that I was sitting in my house at Jodhpur. It was midsummer and very hot. A young man about 23 to 24 years old from Hapur came to meet me. He was handsome and well dressed. He came to me and said, "May I sit down?" I asked him to do so. He sat down on a chair and took out a photograph from his pocket. He said to me, "I want to say something." "Be quick," I said. "It is already 12 in the noon and it would be better if you come back at 4 in the evening." "No, please, Guruji, it shall take only a few minutes." And saying these words, he again took out the photograph, looked at it and placed it back in his pocket. I said to myself, what is he trying to do? He seems to be from a well-to-do family. But why is he acting so strangely? Just as God appears in several forms before common folks, similarly in my life, disciples have turned up in different varied guises. In your life, there may be only one God, the Guru. But in my life, I have seen so many epithets of him in the form of my disciples. I asked him, "Are you a Christian?" "No, Guruji," he said, "I am a Hindu." "Well, fine, you are a Hindu, but what do you want to say to me?" "Guruji, just 1 second," he said, and again took out the photograph, looked at it and replaced it. "Have you escaped from a mental asylum in Shadara? Where are you from?" I asked him. "I live in Hapur, Guruji." "But there is no mental asylum in Hapur. There are asylums in Agra and Shadara. Then how come you are from Hapur?" "Guruji, you think I am mad?" I said, "Well, the way you are behaving, anyone will think that you are mentally disbalanced and have escaped from an asylum." "No, Guruji, this is not true. Please listen to what I have to say." "How can I, when you don't tell me anything?" "Well, Guruji, the thing is that—" "Guruji, please, don't be offended. I want to tell you something." It had become too much, but I controlled myself and said, "Speak up, don't hesitate." "Guruji, I just hope you won't feel offended." "Come on now, why shall I feel offended? If you abuse me, I shall at the most slap you, but I shall not be offended. I shall just slap you, that's all. You may be young, but I am in every way stronger than you." "Guruji, that does not matter." "Okay, let me tell you everything." "You have already wasted 15 minutes, I said in mock anger. "Have you ever loved anyone, Guruji?" "Anyone? Anytime?" I said, "You are the first disciple who is asking such a question. Nevertheless, let me tell you, I have loved my Gurus and all the gods." "This is not what I am talking about, Guruji," he said. "I am asking you something quite different. You are not able to get what I am saying." Again he took out the photo. I got a hint what he was talking about. Still I said, "What do you want to tell me?" He said, "Please tell me clearly, Guruji. Don't hesitate or feel shy. I won't tell anybody. Your secret shall remain safe with me. Have you ever loved anyone?" "Why should I tell you?" I said to him. "I am not bound to tell anything to you. Life is so long, I may or may not have loved someone. But why do you ask?" "Guruji, I am asking you because only a lover can realize the plight of another. You can't understand, Guruji. You don't know what love is, and you can't know." I said to him, "Forget about me. Tell me, how deep is your pain?" I may have experienced only slight pain in my life, and God knows how big your pain is.
I am not even sure if I can reach the depth of your pain. No, Guruji, he said, first reply to my question so that I can present my problem before you. Well, if you insist, I have never loved anyone the way you have. If I had, my disciples would have sent me to prison. I have never done any such thing. Now tell me what you want to say. Guruji, I am in love with someone. I said, well, this is nothing new. All Indians have only one motive in life, to love. And when they fail in love, they come to their gurus, which is the second stage. You have just entered this second stage. Guruji, please don't make fun of me. I am not at all making fun, I said. Guruji, I have fallen in love. I said, you have achieved a great accomplishment indeed, which no one else could have done. But you did it, and the whole of India, rather the whole world feels proud of you. So what? Guruji, do you know Pushpa? I said, as far as I remember, there is no one named Pushpa living anywhere in my neighborhood. Pushpa is also not the name of any river. If you had said Ganga, then I would have told you that Ganga is a river flowing through Haridwar. If you had said Yamuna, I would have told you that it is in Delhi. Pushpa means a flower, but Pushpa, I don't know anything about this name. Not Pushpa, Guruji, Pushpa. I am talking about Pushpa. Well, I don't know any Pushpa. If you want to tell me something about her, go on. Guruji, Pushpa is the girl whom I love. If you come with me to Hapur, I shall show where she lives, and on seeing her, you won't move from the place. You shall go on seeing her, and you won't be able to leave Hapur. But if this is so, how come you are here? I said to him. Well, Guruji, I love her so much. I keep staring at her daily, but she has never even spoken to me. I keep looking at her, but she does not care a bit about me. Guruji, please do something. Use your yantras and mantras and make her come and say to me that she loves me. I have heard that you know how to use yantras and mantras. I have also read your books and the magazine you bring out. Guruji, just look at this photograph. Saying this, he took out the photo once again and touched it to his eyes. You must have talked to her, I said, without looking at the photo. Guruji, this is the problem, that she has never talked to me, he said. She lives in my neighborhood, just next to my house, but she does not talk to me. Please, Guruji, promise that you shall help in our union. I said to myself, half an hour has been wasted in his gibberish talks. This is quite common in love and is nothing new. He is just another lover in the category of Laila Majnu and Romeo Juliet. To him I said, look, I cannot help you in meeting her. I have not opened a bureau to do such work. And I had hardly spoken these words when he fell down unconscious from his chair. I thought that he was feigning, but when I stooped to look at him, I saw him frothing from the mouth. I said to myself, what a fool he is! He shall create trouble for everyone. I sprinkled some water on his face, but nothing happened. My wife, who had probably heard the crashing of the chair, came running and said, what happened? I said, well, nothing has happened. Pushpa has not come, hence he... She looked inquiringly at me. Who is Pushpa? She asked. I said, he has a photo of her in his pocket. I have not even seen it. I took out the photograph from his pocket. It was a photo of a girl taken from quite a distance.
I put it back into his breast pocket lest his heartbeat stopped. I thought that it would be better if the photograph remained near his heart, for then it would keep beating. Maybe it worked as a pacemaker for him. 1 hour passed. We tried everything, made him smell a shoe, put some chili powder into his nostrils, but nothing happened and he remained unconscious. I was worried that it might turn into a police case and the police might believe that I had done something to him, or that he became unconscious because I gave him something to drink. I took him outside to the terrace which was cooler and called my disciples. I told them that he had become unconscious due to the oppressive summer heat. One of the disciples said, "Guruji, from now on, please don't meet anyone after 1 o'clock in the noon." I said, "Fine, I shall take care in future." But how could I know that he would experience an attack of insanity after 12 o'clock? Around 4 o'clock in the evening, he regained consciousness, and as soon as he opened his eyes, he cried out, "Pushpa, Pushpa." In a few moments, he got up, and I said to him, "Don't worry, you are fine." "No, Guruji, first tell me, what will you do for me?" I said, "Don't worry, I will help you. I am here only to help you." I was afraid lest he again went into a swoon. Hence I said, "I shall myself accompany you to Hapur. I shall myself bring her before you. Don't you worry, just get well soon." I have narrated this incident to tell you what actually is the relation between two lovers like. And if you form such a bond with God, you shall become great like Mira, Kabir, Sur, Raidas, and you shall achieve divine enlightenment. If you develop such closeness to the Guru, then the Guru shall always be present in your soul, guiding you and teaching you. This attachment is like an ecstasy, and when such a stage is achieved, then the Guru establishes himself in the conscience of the disciple, and thus all the divinity of the Guru gets transferred into the disciple. If you are poor and a millionaire adopts you, then all his wealth becomes your own and you won't have to earn anything. Similarly, in this stage, the divine powers of the Guru get instilled into the disciple. Then you won't have to chant mantras, you won't have to read the Guru Upanishad or Shishyopanishad. As soon as the divine form of the Guru gets established into your soul, then all the knowledge, enlightenment and ethereal powers of the Guru shall be transferred into you. Rather, you shall become a part of them. Then there shall remain no need to accomplish sadhanas. Love of Guru and sadhana are two ways to reach the same goal. In the first way, you shall have to become a disciple. Disciple means to become one with the body and soul of the Guru. In this stage, you are nothing. There is only one thought, and that is of the Guru. Giving up everything to the Guru does not in any way reflect any selfishness on his part. I have never asked you to give me money. Your aim should be Twadeeyam Vastu Tubyamevam Samarpayeth. My life and everything I possess in it, wealth, pleasures, fame, family, happiness, all belong to you. You have given everything to me, and I offer all of it back in your feet. Along with this, I give up all my lies, deceit, problems, sorrows to you, and I pray to you to vanquish them. And when you reach this stage, the Guru shall himself take the responsibility of your problems and shall solve them completely. Then there shall remain no shortcomings in your life. The process
of reaching this stage is called Pranottan Kriya. The next, that is the fourth stage, is of sadhana. First, there is curiosity, then enlightenment. Next is a disciple and then a sadhak. After reaching this stage, the sadhak accomplishes sadhanas. Lakshmi is bound to appear before him and he never faces any deficiency in his life because the Guru, along with his divinity, his mantra powers, is established in the heart and the soul of such sadhak. When the Ashtasiddhi, Navasiddhis and 10 Mahavidyas remain present before the Guru, they shall also be bound to present themselves before you. Then no enemy shall be able to harm you. Goddess Kali will herself destroy your enemies. Lakshmi will herself bestow wealth upon you. Then you won't have to fold hands or sing hymns before these goddesses. Then you won't have to pray to them or beg before them to help you. You can either pour water over the leaves or into the roots of the plant that is your life. If you pour water into the root, then the whole plant, its branches, its leaves shall become green. जो तो सेवे मूल को फूले फले अगाए. जो तू सेवे मूल को फूले फली अगाए. It is necessary to irrigate the root, the base, which the Shastras have called as Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. If you are still in the stage of a curious learner, then you shall ask all sorts of questions. This Guru is wearing white clothes. How can he be a Guru? How can he do this? How can Lakshmi appear before him? Can he do this? Can he do that? This is all your curiosity. You are still not a disciple. When you enter into yourself, all these questions shall vanish. Laila and Majnu were great lovers. Laila was very dark complexioned and could see with only one eye. Her second eye was squinted. She was also very short and was not at all beautiful. But Majnu fell in love with her and he became so mad in her love that he tore his own clothes, started ripping apart his flesh with nails, and remained standing near her house, waiting to have a glimpse of her through a window. The king, the father of Laila, had Majnu brought before him. He said, Majnu, we have had to face a lot of social disgrace, all because of you. Before you there are the 25 most beautiful women of this kingdom. Choose any one of them and forget Laila. Majnu looked carefully at each of the women and then said, Laila is not here among them. When she is not there, what shall I do with them? This is the stage you have to reach. And when you do so, it won't matter if the Guru is wearing white clothes or akar robes. A divine image of the Guru shall always remain before your eyes and you shall attain divine bliss. Then you shall see the image of the Guru even when your eyes are closed or open. On reaching this stage, you shall yourself attain the state of a Guru and you shall then be called Brahma, Rudra. This process shall elevate your spiritual life to empyrean heights and your Kundalini shall get activated all by itself. How many sadhanas can you do? You have so little time and so much to achieve. This is a straight way, but to follow it, there should be a deep longing and tears of joy in your eyes. You should be fully devoted and there should be a determination to achieve everything by sacrificing all you possess. I hope you achieve all this. I bless you from the core of my heart. बोले पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। बैठे बैठे करें।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च
ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ